Hello everyone, welcome back to our lecture series of complex analysis. I hope you are enjoying the lecture series of complex analysis. In the previous lecture, we have discussed contours and then contour integrals. In this lecture, we are going to discuss some examples of contour integrals where we will see that how an integral can be calculated when a function and the contour is given. Okay, so let us start this lecture by writing an example. This is example number 1. Example 1, and it is saying that I'm taking these as a question, okay, because there is a different kind of discussion in your book. So evaluate the integral, or let me write the contour integral. Which one? Integral along C of this function dz over z. This is nothing but this function, okay, integral along C of 1 by z dz. okay, तो यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है 1 by z गिवन है along the contour. Let me write this as contour C1, okay, where C1 is the upper half of unit circle modulus of z is equals to 1 from 1 to -1. या तो हो सकता है आपको कंटूर इस फॉर्म में गिवन हो, या फिर आपको इस फॉर्म में भी गिवन हो सकता है जहां पर ये एक्सप्लिसिट नहीं बताया गया हो कि C1 कंटूर किस तरीके की ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और लेट अस राइट दैट, or let us write the parameterization of this contour, or where C1 is given by z of theta is equals to e to the power iota theta, where theta is running from 0 to pi. ओके, या तो हमें ऐसा बताया गया हो कि C1 is the upper half of the unit circle, so we know how to draw the unit circle. Suppose this is our complex plane. The moment we want to discuss the unit circle, suppose this is the 1 and this point is -1. Okay, this point is 1 and this point is -1. So C1 is the upper half of unit circle. This is the unit circle from 1, this point to -1. So the orientation is given anti-clockwise, that is the positive orientation. तो हमें according to the language अगर हम लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे. Now if we go through this particular representation, and then we know that this is the parametric equation of a circle. Now in this circle, this theta is varying from 0 to pi. When we put theta equals to 0, we will have 1, and then theta equals to pi पर हमें value मिलेगी -1. That means this particular structure is also representing the same structure. This is the same structure when you are writing z theta is equal to e to the power iota theta, where theta is running from 0 to pi. Okay, so इस तरीके से लिखने का मेरा सेंस है कि हमें जब भी कोई कॉन्टूर गिवन है तो उसकी इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं. ठीक है, जहां पर हो सकता है कि हमें किसी स्टेटमेंट के थ्रू ज्योमेट्री बताया गया हो, या फिर इसके पैरामीटराइजेशन के थ्रू ज्योमेट्री गिवन हो. तो दोनों ही केस में हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो कौन सा है, और इसका ओरिएंटेशन क्या है. ठीक है, सो let us write the solution to this integral. Solution. So solution says
हमारे पास जो कर्व गिवन है that is from z equals to 1 to z equals to minus 1. So let me use this parametric equation. Okay, so from the definition of contour integral, we know that contour integral of fz dz is nothing but the contour integral, the real integral from a to b of the function f of z t, then z prime t dt, like, okay, where t was running from a to b. Okay, that is the definition that must be in your mind always. Okay, अगर हम इस definition को use करें तो here we are having f of z is equals to 1 by z and contour c, that is z of theta. Let me write the contour c1. Let contour c, that is equals to c1, and this is given by z theta, that is equals to e to the power iota theta, where theta is varying from 0 to pi. So this is the scenario that we are having. Okay, so integral along c1 of 1 by z with respect to z is nothing but, now this this initial limit a is 0, so we will start from 0 and ending with pi, and f of zt, that means e to the power iota theta 1 upon z, and z is nothing but the z theta, so we'll write 1 upon z, that is equals to iota theta. Then the differentiation of this with respect to the given variable, यहाँ पर given variable theta है, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा e to the power iota theta and then here iota. Okay, and then d theta. So this is the simple real integration. Okay, now this will be equals to iota integration from 0 to pi of d theta. So here we are having the constant, and that is, this is pi minus 0. You can simply calculate the value is pi iota. Okay, so the value of this function along this contour is nothing but pi time iota. Okay, so I hope you clear with this particular example. यहाँ पर हमने contour c1 ऐसा given था और function ये given था. Okay, now with the same function we will take another contour. Okay, so let us discuss this the same example with the different contour. Okay, now let c2 is the lower half of unit circle, which is mod of z is equals to 1 from, again this is saying 1 to minus 1. Okay, so let me write, this is our second kind of scenario. और इसी तरीके के अगर हमें पैरामीटराइजेशन में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, लेट मी डिस्कस दैट वन ऑल्सो. सपोज दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स प्लेन. अभी हमें ये कहा गया है दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई द C2 कर्व विच इज द लोअर हाफ ऑफ यूनिट सर्कल. लेट मी राइट, दिस इज आवर lower half of unit circle. Now the point is starting from 1 to minus 1, so we know this point is 1 and this point is minus 1, so we are starting from 1 and ending with minus 1. So the orientation is given clockwise direction or the negative orientation. Okay, और जब नेगेटिव ओरिएंटेशन होता है तब हमें वहां पर ये किस कर्व का नेगेटिव है वो हम यूज कर सकते हैं. ओके, सो आई कैन राइट दिस कर्व इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू minus 1. हम दोनों तरीकों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेट मी डू विद दिस वन, और इफ आई से, और दिस C2 कैन बी गिवन एज z theta is equals to iota
theta, this is the unit circle, then this theta की रेंज हम कहाँ से कहाँ लें, so that the initial point is 1 and the ending point is -1. तो ये वाली हमें रेंज लेने के लिए आई कैन से I want theta is equal to 1 first and then theta equals to -1 at last. Okay, so this and that the orientation must be the counterclockwise and circle must be lower half. Okay, so यहाँ पर क्योंकि देखिए हम जब यहाँ बात कर रहे थे तब हमें चाहिए था कि यहाँ पर e टू द पावर आयटा थीटा में कोई एक वैल्यू आएगी विच इज थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू, जहाँ पर इसकी वैल्यू दिस पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज द आयटा. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू चाहिए, माइनस आयटा. और माइनस आयटा देखिए यहाँ पर जब हम यहाँ पर 1 लिखते हैं ना तो वो होता है आयटा के लिए, क्योंकि हम जब भी z को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होगा x प्लस आयटा. अब यहाँ पर ये भी रियल नंबर होता है, ये भी रियल नंबर होता है. जब हम x को यहाँ पर डिनोट करते हैं तो वो x दिस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y को हम इस वर्टिकल लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अगर हमें आयटा को बताना है कि ये कहाँ पर है इस प्लेन में, तो हम कहेंगे दिस इज द आयटा. ओके, क्योंकि जब हम y इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा आयटा एंड x इक्वल टू 0. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज कि हमें y तो आयटा लेना था ऐसा कुछ. तो यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये तो लोअर हाफ सर्कल है. वहाँ पर अभी जस्ट हमने जो पहले एग्जाम्पल डिस्कस किया था यहाँ पर अपर हाफ प्लेन था. तो अब हम इस इक्वेशन में ही लोअर हाफ और अपर हाफ को कैसे डिस्कस कर सकते हैं. इफ आई पुट द नेगेटिव साइन हियर, now see, when I put x this theta equals to pi by 2, then this will let me write this also. So we know e to the power iota theta is nothing but cos theta plus iota sin theta. Okay, and same time minus iota theta is cos theta minus iota sin theta. So this will give us the upper half of the circle and this will give us the lower half of the circle with this orientation. Okay, now this theta is varying from, if I choose theta equals to 0 then this will give us 1. If I choose theta equals to pi by 2 then it will give us the minus pi, and when I minus 1 sorry, and if we choose theta equals to pi, this is the 0, this is pi by 2, now this is pi, so this will be cos pi minus iota sin pi, so this will be equals to minus 1. So I can say this theta is varying from 0 to pi again if I use the negative sign here. Okay, इसके अलावा भी हम एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन लेंगे जो हम एक बार इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम दूसरे रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं. ठीक है, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस c2 और दिस इंटीग्रल अलोंग द c2 ऑफ 1 by z dz. ओके, जस्ट रिमेंबर दी वन थिंग कि हम किसी भी फंक्शन के इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर अगेन रेंज है 0 से पाई और अभी जो 1 अपॉन जेड है, जेड का मतलब क्या, ई टू द पावर माइनस आयटा थीटा. सो आई एम राइटिंग ई टू द पावर माइनस आयटा थीटा. अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ई टू द पावर आयटा माइनस आयटा थीटा का, तो ये होगा ई टू द पावर माइनस आयटा थीटा and the minus iota will be here and then d theta. Okay, that is again a simple scenario, and this is going to be, this will be cancel out and then minus iota integration from 0 to pi of d theta, right? So this is the scenario. Again, pi minus 0 will give us pi and this is minus iota, so the value of this integral will be minus pi iota. Okay, अब यहाँ पर हम एक बात देख पा रहे हैं कि जो पहला इंटीग्रल था जब हमने अपर हाफ सर्कल के बारे में देखा था तब वहाँ पर पाई आयटा वैल्यू थी और यहाँ पर माइनस पाई आयटा वैल्यू. ओके, now we want to calculate this integral using some integral property, so let us do in that way also. So we can say if I'm denoting this as C2. Now I'm taking some another kind of
curve, so that is now let C3 that is equals to this curve. Let C3 is equals to e to the power iota theta, where theta is running from pi by 2. Let me take this particular scenario, that is pi to 2 pi. Okay, now ये हमें कैसा दिखेगा? So let me write, if this is representing a complex plane and say this point is 1 and here is the -1. Okay, so हमें स्टार्ट करना है पाई से और जाना है 2 पाई तक. ठीक है, अभी इसमें हम क्योंकि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, सो दिस विल स्टार्ट लाइक दिस. सो हम यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं. ओके, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं. This is our unit circle and this particular value is -1, this value is 1. तो इसका ओरिएंटेशन क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू थी पाई और फिर पाई की वैल्यूज बढ़ के 2 पाई तक जा रही है. सो दिस इज द ओरिएंटेशन. अब जो हमें प्रीवियसली कर्व गिवन था ये वाला, और इस वाले कर्व C2 और C3 कर्व में डिफरेंस केवल इस ओरिएंटेशन का ही है. राइट, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पहले वाला कर्व था और ये वाला कर्व है, दोनों एक दूसरे की निगेशन है. सो लेट अस आइडेंटिफाई द इंटीग्रल अलोंग दिस कर्व, और फिर हम इस कर्व का जब निगेशन लेंगे तो क्या हमें C2 के अलोंग जो इंटीग्रल आइडेंटिफाई किया था वो मिलता है क्या? ओके, सो लेट अस आइडेंटिफाई दिस वन. सो क्लियरली वी कैन से, लेट मी मेंशन then clearly whatever the C3 curve is, the C3 curve is the negation of C2 curve. Okay, we can say यहाँ पर दोनों का set of point तो सेम ही है बट इनका ओरिएंटेशन अलग है. सो वी आर राइटिंग इन दिस वे. ओके, अभी हम इन दोनों को एक्सप्लिसिट डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले हम C3 के अलोंग इंटीग्रल फाइंड करते हैं. सो लेट मी राइट द इंटीग्रेशन अलोंग C3 ऑफ 1 by z dz, that is equals to integration from pi to 2 pi. So here range is pi to 2 pi and 1 upon z means that, let me write in a more precise way, the C3 curve given by z theta is equals to this one. Okay, now the z theta is e to the power iota theta. So we are writing e to the power 1 upon e to the power iota theta. अगेन व्हेन वी डू द डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर हमें मिलेगा e to the power iota theta and now theta is at here. Okay, and that is d theta. Again the scenario is same. यहाँ पर अब इंटीग्रेशन होगा iota टाइम pi to 2 pi of d theta. Again 2 pi minus pi will be give us pi iota. Okay, so this is the integration along the curve C3. Now we know the property about the negation of integral. Okay, but we know that integration along C2, let me write C2 of any function f of z, that is piecewise smooth function of course, that is equals to, अगर मुझे negation, let me write negation here, अगर मुझे C2 के negation के along या नेगेटिव के अलोंग अगर मुझे इंटीग्रल की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, सो दिस इज द नेगेटिव ऑफ द इंटीग्रल अलोंग द कर्व C2. ओके, वी हैव प्रूव्ड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ओके, वी नो दैट this is always a case. Now we know what is minus C2. What is minus C2? Minus C2 is nothing but C3. We have mentioned here that minus C2 is C3. So the integration along this particular function, let me write in explicit form, 1 by z dz is nothing but negative of integration along C2 1 by z dz. ओके, एंड वी हैव कैलकुलेटेड कि इसका वैल्यू क्या है, इस इंटीग्रल का वैल्यू, दैट वैल्यू इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल gave us minus pi. Okay, we have calculated this and this is equals to pi I.
तो चाहे हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करें या इस तरीके से, दोनों से ही हमें इंटीग्रल की वैल्यू सेम ही मिल रही है. ओके, नाउ लेट अस चूज एन कर्व C that is equals to C1 plus C2 curve. Okay, so what was the C2 curve? That is the C2 curve, and the C1 curve is this one. So let us join this. What is the C1 plus C2? So this is going to be an interesting one. Okay, so we can say C1 was the curve from 1 to -1. So we can draw I want to draw a proper circle. Okay, so that was the scenario. यहाँ पर था 1, यहाँ पर था -1. जो पहला कर्व था उसमें हम 1 से -1 की तरफ आ रहे थे, तो दैट वाज द ओरिएंटेशन एंड दिस कर्व इज नथिंग बट द कर्व C1. ठीक है, फिर हम आए दूसरे सिनेरियो पे. वहां पर हमारे पास कर्व कैसा था कि वो कर्व था 1 से -1 की तरफ. तो द सिनेरियो इज लाइक दिस, द ओरिएंटेशन इज लाइक दिस. ठीक है, जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें ऐसा सा कुछ सर्कल मिलेगा. बट दिस इज द जब हम सेट ऑफ पॉइंट्स की बात करेंगे तब तो ये हमारे लिए एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है. बट जब हम ओरिएंटेशन को देखेंगे तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर 1 से -1 जा रहा है और अगेन फिर 1 से -1 की तरफ आ रहा है. ओके, सो दिस कर्व वाज C2. ठीक है, अभी हम C1 और C2 को ज्वाइन करेंगे तो हमें ऐसा सा कुछ मिलने वाला है. अब हम जब इनका एडिशन करना चाहें, क्योंकि हमने C2 के अलोंग ये वाला कर्व देखा था और that was the C2 curve, that is 1 to -1, and this is our curve C1 which is from 1 to -1. ओके, अभी अगर हम कहें कि हमने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया है तो ये वाला इंटीग्रेशन की वैल्यू हम कैसे देंगे? द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज गिवन बाय the integral C. We can write integral along C of 1 by z dz, that is nothing but the integration along C1 plus C2 1 by z dz, and this is equals to the integral along C1 of 1 by z dz plus integral along C2 of 1 by z dz. Okay, now we know the values of this integral. This value is nothing but pi iota, and this value is nothing but minus pi iota. So the all over integral value is 0. Okay, तो अगर हम इस कर्व विच इज द क्लोज्ड कर्व, इसके बारे में अगर देखना चाहें, विच इज इंटरसेक्टिंग एट 1 एंड ऑल्सो -1. ओके, सो दिस इज क्लोज्ड बट नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. ओके, तो इस कर्व के अलोंग जब हम इंटीग्रल आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 आ रही है. नाउ लेट अस आइडेंटिफाई the another value, that is C curve, that is equals to, now let C is equals to C1 minus C2. Okay, so if we choose the negation of this C2 curve, or you can write C1 plus C3, so both are the same things. So this integral will give us integration from C of along this curve C of the function 1 by z dz, that is equals to integration C1 minus C2 of 1 by z dz, right? And that value is nothing but integration along C1 of 1 by z dz plus integration along minus C2 of 1 by z dz. ओके, एंड वी नो कि जब भी हम इंटीग्रेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सो दैट इंटीग्रेशन इज C1 1 by z dz, and the integration along negative of a curve is nothing but the negative of the integration, so that is equals to 1 by z dz. Okay, now integration along C2 was minus pi iota, so this is pi iota
minus minus pi iota. Okay, so this will be equals to 2 pi iota. Now if you want to identify कि ये कर्व दिखेगा कैसा, तो we can draw, like suppose this is our complex plane and this is going to be our unit circle. Okay, this is our unit circle. This point is 1, this point is -1. Now look at this scenario. पहला जो कर्व है C1 वो हमारे लिए 1 से -1 को ज्वाइन करता है, और जो C2 कर्व था वो भी 1 से -1 की तरफ जा रहा था. बट इफ यू आर टेकिंग द negation of this, then the curve is like this. Okay, so now the orientation of the both of these curve are positive. Okay, so this is now simple closed curve which is starting from 1 and ending with 1. Okay, the previous one, this curve C1 plus C2, that particular curve, this is not simple closed curve because here we are having two intersection. Now here this here we will count either this or this as an intersecting point. ठीक है, so this is about the subtraction and the sum of two curve and orientation of these two curves C1 and C2. तो इस एग्जाम्पल में हमने सारी जो वैरायटी पॉसिबल है किसी कर्व के लिए वो हमने डिस्कस की है. ठीक है.